Gangster. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog, another episode of Feature My Car. And today we are going to feature one car of Kolkata, that is the famous Widebody Civic of Shaktoshida. ठीक है, तो B-rolls enjoy करो पहले and then we'll talk what he have on the car, then we'll go for a drive. So stay tuned and पूरा video end तक देखना. So let's start this video. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. I don't shame, I admit it. Can find me to see. B-rolls कैसे लगे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को. एंड हियर इज शक्तोशिदा, Hello. the owner of this one of one wide body Civic. So firstly, Shaktoshida, we know that you have a own customization shop. So please tell us about your shop. So basically, I've started my own mod shop here in Kolkata, located at Behala, Kadamtala, if you know. So my educational qualification is also in automobile only. Like I'm automobile designer. Like I have completed my BTech. Earlier, I was into some other job, so I just got frustrated. I thought like let's get my roots where I belong, right? Like so that's automotive. We can see your one of one wide body Civic. मतलब कितना इंचेस बाहर है, मतलब what is the measurement unit? इसमें फ्रंट वाला 35 mm फ्रंट एक्सेल में स्पेसर्ड है एंड रियर इज 40 mm. 40 mm and full जो फेंडर है and the rear quarter panel is designed by you? Completely. Entirely designing, then fabrication, everything is done. This is a wrap, satin weight. Okay. Yeah. What wheels you are These using? are 18 inches, 9J Rotiforms, running on Accelera 5 tires, and those are mated to Skunk2 suspensions. This is a DeepDish wheel. Yeah, that's a DeepDish wheel, but apart from that, the suspension, it has got approximately 2.4 inches in the front lower, and the rear lowering is around 2. It's a lowering spring from Skunk2. Okay. Yeah, Skunk2 track editions. अगर पीछे के साइड में अगर हम बोलेंगे तो you can see the difference, right? From here you can see how is the Civic is going wide and wilder. It looks wilder, man. पीछे से अगर आप देखोगे, so this boot and this full quarter panel is fabricated by you, right? Yeah. This is a ducktail spoiler, split ones. Like you can see the split in between, like it's in a 2-piece. Yes. And इधर पे you can see Halder Automotive sticker. You can also find me on Instagram by Halder Automotive itself. Okay, so can we drop a contact number in the description? Sure. कौन से टाइप के काम आप करते See, हैं? यहाँ पे हम लोग फैब्रिकेशंस का, जैसे बॉडी वर्क्स का हो गया, या अंदर का रोल केज वगैरह हो गया, या चैसी स्ट्रेंथनिंग हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट या इनटेक, जैसे इसमें सिमोटा कार्बन 2 इनटेक लगा हुआ है. अच्छा. एंड एग्जॉस्ट में फ्लो मास्टर का इनटेक है, ये चेम्बर्ड है. मतलब इसका नोट आप लोगों ने शायद से ख्याल किया होगा कि लाइक ये थोड़ा बेसी टाइप का नोट है. ये उतना ग्राउली नोट नहीं है. दिस इज मोर ऑफ अ बेस काइंड. मतलब ये एक्चुअली चेम्बर्ड एग्जॉस्ट है. एंड उसके अलावा आपको मेरे शॉप में परफॉर्मेंस ब्रेक्स मिल जाएंगे, लाइक रोटर्स, देन पैड्स फ्रॉम वेरियस कंपनीज लाइक ब्रेम्बो हो गया, EBC हो गया, एंड मैनी मोर. ओके. इधर पे आप लोग साइड प्रोफाइल नोट कर सकते हो. एंड दीज आर 9J टायर्स. मतलब जो वाइडनेस है वो मैच करता है विद द बॉडी, एंड यू हैव टू मेक द टायर्स वाइड इफ़ यू डू अ वाइड बॉडी. इधर से आप प्रॉपर वाइड देख सकते हो, कितना ज़्यादा वाइड है. ठीक है. एंड यू कैन सी द क्वार्टर पैनल, द फेंडर. इसके पीछे मेरा मेन मकसद ये था कि लाइक जो स्टॉक डिज़ाइन है, बिकॉज ऑलरेडी सिविक इज़ अ स्लीक कार, लाइक इसका डिज़ाइन बहुत सही एक जेंटल टाइप का. सो मैंने क्या किया कि लाइक जो
प्री एग्जिस्टिंग डिज़ाइन था उसी को थोड़ा एक्सटेंड किया उसी के साथ। जैसे आप देख सकते हो कि ये वाला कर्व पूरा मैच्ड है। अपार्ट फ्रॉम जनरली क्या होता है सिविक का यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आता है राइट, बट मैंने इस कर्व को पूरा मैच कर दिया इसके साथ। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपका बम्पर्स के बीच में कोई गैप्स नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपका जनरली क्या होता है आपका बम्पर कटआउट रहता है राइट, यहाँ पे वैसा कोई नहीं है। ये पूरा कम्प्लीटली एक सीम्ड बॉडी। दिस इज अ होल पीस, मतलब इधर से लेके चालू करके सिंगल पूरा ये, एंड दिस पोर्शन इज अ सिंगल पीस। एंड सेम गोज विद द रैप एज वेल। लाइक जैसे यहाँ पे मेरा ए पिलर से स्टार्ट करके देन रियर फेंडर्स हो गया, देन रियर बम्पर हो गया, कंटिन्यूड ओवर देयर। ये कंप्लीट एक सिंगल पीस रैप है। Okay. So this is basically a airbox kind of thing. Like I have removed the airbox from it because it was getting deposited with some debris like sand and dust, because we're living in a very sandy and not sandy exactly, very dusty place, right? So I've removed that. So this is basically for the short ram air intake. It directly inhales through it. And this is the hood. Yeah, these are the hood latches. Like you can see the small pin. This is the chassis member and this is the hood member. So whenever you are pushing it, so this is locking it. You can see the under the hood. I'm extremely sorry कि इंजन पे बहुत ही गंदा है because मुझे आने से पहले टाइम नहीं मिला, दूसरा काम था। So you can see the throttle body over there and एक छोटा सा प्लम्बिंग हुआ है, यहाँ से ब्रीदर पाइप गया है, then O2 सेंसर है एंड यहाँ पे सी मोटर कार्बन। एंड प्रीवियसली मैं यहाँ पे एक एयरबॉक्स रखा था जो प्रीवियसली इसको पूरा हीटर सील कर रहा था। एंड अभी क्योंकि मैं जैसे बोला हूँ कि अभी धूल वगैरह की वजह से इश्यूज हो रहा था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। इवन दिस इज कार्व्ड, मतलब मेड वन। This is a custom made splitter. These are the adjusters and this is a splitter. This is a custom made splitter and इधर पे थोड़े बहुत normal fog lamps लगे हुए हैं। The scene is कि मुझे एक्चुअली ये हेडलाइट को टिंट करने के बाद मेरा ब्राइटनेस बहुत कम हो गया था। This is a smoke. सो उसी की वजह से मैंने ये एक्सटर्नल फॉग लाइट्स लगाया। तो जनरल जो फॉग लाइट्स था उसका डिज़ाइन मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, एंड अलग बात है ये भी उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, बट हाँ दिस इज़ द लाइक बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के बीच में यही सेटल हो रहा था। हेंस आई गॉट फॉर द प्रोजेक्टर। And now you will be hearing the exhaust note. तो इंटीरियर में देयर इज नथिंग स्पेशल, नॉर्मल से सीट कवर्स लगे हुए हैं एंड दिस इज अ शॉर्ट शिफ्टर गियर नॉब राइट, एंड दीज आर ऑल कार्बन रैप्ड और डिप्ड। दिस इज रैप। ओके, एंड इधर पे भी आपको रैप दिखने को मिल जाएगा एंड दिस शिफ्टर लुक्स कूल एक्चुअली। You can also note the slotted drilled rotors by power stop, and those are paired with carbon ceramic brake pads. Okay. As same by power stop only. So for a better bite, but the alternative thing is you'll be having more brake dust. Like you can see the brake dust deposition over the calipers, right? Right. And how's the response? It's better than the stock actually. Okay. Gangster. तो सप्तर्षिदा का सिविक का वीडियो इधर पे एंड करते हैं। मैंने नहीं चलाया क्योंकि 2 सिविक ऑलरेडी बैक टू बैक मैं चलाया हूँ। And so if you guys enjoy this video, don't forget the like button, subscribe to my channel, turn the notification bells on, follow me on Instagram @invalid.username404. As always, I'm at the end of today's video. I look forward to seeing you next video real soon. Bye bye. Action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be some